आपने देखी हेडलाइंस और अब खबरों की डिटेल। और सबसे पहले नजर डालते हैं ह्यूस्टन की सिचुएशन पर। हैरिस काउंटी टेक्सास में मौत हुई है सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में एक 13 ईयर ओल्ड टीनेजर की, जिसका ऐलान किया हैरिस काउंटी शेरिफ एड गोंजालेस ने। ये लड़का मिला है डेड नॉर्थ वेस्ट हैरिस काउंटी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में आज अर्ली मॉर्निंग, जिसके लिए डेप्यूटीज का कहना है कि टीनेजर की मौत हुई है बहुत ही सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में। जबकि शेरिफ का कहना है कि उनके डेप्यूटीज ने रिसीव की 911 कॉल आज सुबह के 2 बजे FM 1960 नियर एलरिज पार्कवे की लोकेशन पर मौजूद अपार्टमेंट यूनिट से। जब उनको मिला ये लड़का अनरिस्पॉन्सिव लेटा हुआ फैमिली रूम में। जब डेप्यूटीज को मिले ड्रॉप्स ऑफ ब्लड उसकी बॉडी के कई डिफरेंट हिस्सों पर से, जबकि ये लड़का सो रहा था फीटल पोजीशन में लिविंग रूम फ्लोर पर। जब उसकी फैमिली ने बताया डेप्यूटीज को कि वो अक्सर ऐसे ही सोता था। लड़के की मां मौजूद थी सीन पर, जबकि कोई डिटेन या अरेस्ट नहीं हुआ है, मगर इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। And they discovered a 13-year-old male lying in the living room area of the apartment unit. He was unresponsive. They began contemplating starting life-saving measures, but it was apparent to the EMS personnel that the teen had been deceased most likely for several hours at least. That's just an estimation. Kind of looking at what occurred, they know that since in the morning of yesterday morning, which would have been Sunday, they at approximately 8 a.m. the teen just kind of slept on the family on the floor. We're told that's where he slept, typically on the floor, and just appeared to be going to sleep. And they didn't think anything of it. I believe they gave him some aspirin at approximately 3 p.m. in the afternoon. They observed him again. They called out his name. He was not waking up at that point. Other children in the apartment also were trying to touch him, and he was unresponsive. That was at approximately 3 p.m. Yesterday afternoon. And again, this morning is when they went to him. They said they could see some drops of blood just in different places. At that point, that's when they finally called the authorities to come out here to the location. और ऑफ ड्यूटी टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी ट्रूपर ने शूट किया एक आदमी को, जो कि कोशिश कर रहा था ब्रेक इन करने की एक अपार्टमेंट में डाउनटाउन ह्यूस्टन की लोकेशन पर। ये शूटिंग हुई है जस्ट आफ्टर मिडनाइट अपार्टमेंट बिल्डिंग में, जो कि लोकेटेड है 500 ब्लॉक ऑफ क्रॉफर्ड स्ट्रीट पर, जो कि है राइट अक्रॉस फ्रॉम द मिनट मेड पार्क। जब ह्यूस्टन पुलिस वहां पहुंची तो DPS ट्रूपर ने उनको बताया कि वो अपने अपार्टमेंट में था जब उसने देखा कि सस्पेक्ट कोशिश कर रहा था घुसने की दूसरे अपार्टमेंट में, जिस पर उसने गोली चला दी सस्पेक्ट पर, जो कि उसको लगी उसके शोल्डर में, जिसके बाद सस्पेक्ट मौके से भाग निकला, मगर इवेंचुअली उसको पुलिस ने पकड़ लिया। When our officer arrived, they talked to the trooper and they learned that someone was trying to break into the apartment. The trooper was off duty at that time, and he discharged his weapon one time toward the suspect. The suspect was struck, and he left the apartment. And when our officer arrived, they were able to locate him short moments later, and he was bleeding. So the officers provided medical attention. They applied 2 tourniquets to save his life, and he was transported to our local hospital where he's expected to survive. And he will be questioned later on about this incident. और हैरिस काउंटी और नॉर्थ ईस्ट ह्यूस्टन में एक औरत की मौत हुई है डोमेस्टिक वायलेंस से, जब उसके हस्बैंड ने उसको शूट किया एक स्वॉट सिचुएशन के दौरान, जब नेगोशिएशंस जारी थे। ये डोमेस्टिक डिस्प्यूट शुरू हुआ एक औरत और उसके हस्बैंड के दरमियान, जो कि चला 5 घंटे के स्टैंड ऑफ के साथ। जब ह्यूस्टन पुलिस पहुंची कल शाम के 5 बजे रिसीव करने के बाद डिस्ट्रेस्ड कॉल इस औरत की तरफ से, जिसके दौरान उनको आवाज़ आई शूटिंग की भी घर के अंदर से, जो कि लोकेटेड था 4300 ब्लॉक ऑफ वेस्टर रिज ड्राइव पर। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने विंडो से देखा कि एक औरत है डेड, जिसकी मौत हुई थी गन शॉट वुंड से, जिसके बाद से उसके सस्पेक्ट, जो कि औरत का हस्बैंड था, ने अपने आप को बैरिकेड किया हुआ था। कपल के बीच में डिवोर्स का झगड़ा चल रहा था, जबकि घर के अंदर था एक और 3 साल का बच्चा, जिसको निकाला गया सेफली और ले जाया गया हॉस्पिटल फर्दर इवैल्यूएशन के लिए। So tonight, approximately about 5 p.m., there was a call in to 911, a female calling in, and during that call, dispatch heard a gunshot. Patrol responded, found that a female had been shot inside the residence.
There was a young child inside the house. They eventually got that child out, but the male that did the shooting was still inside and refused to come out. So we were deployed, got here, started negotiations, and were eventually able to get him to come out peacefully. I believe there was some prior, maybe some domestic issues and pending divorce, but again, this is all preliminary and under investigation. अल पासो टेक्सास में खोल दिए गए हैं ओवरफ्लो शेल्टर हैंडल करने के लिए सर्ज माइग्रेंट्स की जो कि आ रहे हैं इलीगली क्रॉस करते हुए बॉर्डर यूनाइटेड स्टेट्स में, जबकि सिटी लीडर्स का कहना है कि उनका सिटी एल पासो रीच कर गया है ब्रेकिंग पॉइंट इस माइग्रेंट सर्ज से जो कि क्रॉस करते हैं बॉर्डर, और ये न्यू फैसिलिटी होल्ड कर सकती है करीब 400 लोगों को। मगर ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि एल पासो में ऑलरेडी हैं करीब 6500 माइग्रेंट्स उनकी कस्टडी में, जबकि उनका सिटी रिसीव कर रहा है करीब मोर देन 2000 माइग्रेंट्स एवरी डे से भी ज़्यादा, जबकि सिटी में इस समय शेल्टर्ड हैं ओवर 7000 माइग्रेंट्स और जिनको सर्व किए जा चुके हैं मोर देन 16,000 मील्स लास्ट 10 डेज में। जबकि सिटी ऑफिशियल्स के अनुसार उनके सिटी को मिली है मॉनेटरी सपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, मगर ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है हैंडल करने का माइग्रेंट सर्च को जो कि ओवरफ्लो की सूरत में जारी है, जो कि एंटर कर रहे हैं यूएस एल पासो टेक्सास बॉर्डर से। I don't think anyone should leverage anyone. I think politicians should do their job. I think the House should do its job. I think the Senate should do its job, and I think the President should do his job. We should all work together. It may not be exactly what we all want, but that's why the American public, elected us in these different chambers. And right now, you see none of that. You see, it's just always somebody else's fault. And when there is a shutdown, there are real people that are going to be hurt. And once again, no one's really talking about what happens after that. And that's what I'm really focused on, is how do we get to some sense of real things, not, things that the House passes that the Senate has no chance of picking up, or the Senate passes and the House has no chance of passing up. What are some real things that can ultimately get us to a point where if there is a government shutdown, we can restart the government and get things going again?